Okay, now we're live. Yeah, guys, now we're actually live. That's great. So, we can start. Um, so let's start with ChatGPT. Okay. Uh, so yesterday we have covered till DBMS and questions of data science and computer science, KTA and CS. सो आज हम करने वाले हैं 25 तक हमने सॉल्व कर लिया था, 24 नहीं किया था. ठीक है, तो हम लोग 24 स्टार्ट करने वाले हैं. सो जस्ट search the questions, the number of questions in KTA, all DBMS questions from KTA 2024. And let's see whatever they are providing us. I don't know. Okay, completely fine. So let's go to 2024 number question. Right. Two 2024 question. Okay. Get 2024 DA. Yes. And it's got the paper. So this is the questions of great DBMS questions. These are for 24. Question number 16 is about functional dependencies, but I can see that question number 16 is not so, and there is something problematic. Even 19 is not even. So I think we can directly upload it and ask.
get 24 questions. And now trying to get questions is required. Just take some time, but I mean, it will help you to search through all the questions. Yes, I think it's good, but again, okay. Let's start from 47. That is relational algebra. Oh, question actually didn't match. Okay, let's get out of it. We don't waste time, and so I think just go to the CS questions. We'll come back here later. Write all this DBMS question from the CS paper. Get CS 25. It'll take some time, and will be providing us. Yes, yes, yes. Actually, it's providing us. So let's just go into get CS 25. Okay, so I just remove this, and okay, question number 37. Let's go back to there. Okay, so actually I think there is a mismatch in the question. Question doesn't match, so I think we should directly put the paper, CS paper, and ask them to provide all the DBMS questions from this document. So now I think it's going to help, so just wait for some seconds. And
one of the very important part is that you have to understand that which question you have to take, because that is the important part to compete for an exam, because you cannot waste time studying okay, lot of topics each and after each. You have to focus more on solving questions. That is actually important rather than right which I am talking about. Okay, so we can see here that question number 17 is the functional dependencies question from the uh, GATE paper of CS from 2025. So I'm trying to go to the question number 17, and I hope we'll get that. Yes, and we'll get that. Actually not. Again, they are mismatching questions. You can understand. The prompt engine you cannot directly verify everything. So I think we have to go directly to the question rather than believing that whether this point is exactly that question or not. So you have to directly go to the question. You have to. I'm searching that question now. Whichever question is actually matching this one, right? The functional dependencies, and we will start solving that. So we'll try to assign the question, and the question is on. Okay, I think this should be there. It should be here. Um, I mean, somewhere around. Not. I think this should be near. But again, somehow it's very problematic to find such questions. Really. Yes, this one. This one, I think the first. I think in this paper, very rare question, SQL question. This one, I think we have to solve, and this could be very tough. I mean, one of the toughest questions in the SQL. So let's start. I mean, we have wasted many of the time, so I think we should rather focus on solving question than wasting time. So just uh, we can start from it here, and you can see this when you are watching this question. That the first thing your mind blows up. Okay, what I have to do, what I have to do actually, and you can understand. Whenever these things happen, our mind always comes up with an understanding that we are solving. We have to solve in the inner side, right? Once you solve the inner side, you can go in the outer side. That's how our mind works. Okay, I'm just removing it, but we have to, for such cases, we have to solve this part. And if you ask me that whether what will be this, I mean, again, this is again tough. It's not that easy. So if you are trying to solve this question, then of course you have to check three tables, and the most important part is you are trying to ask that whether I can reduce the complexity or not of this question. Yes, we can do. That's why you are here, and we can do. So there's a three tables: team, coach, and members. Right? Again, we have three tables now, and now we are creating a join. First join in between team and coach. Second join between team and members. Right? Two joins we are creating. So whenever you are creating two joins between team and coach, suppose you are creating a join between team and coach. If you are doing that, if you do, then the common attributes will be this CID. I mean, between coach and team, are there any common attributes? Yes, CID is a common attribute. And for team and members, common attribute will be TID. You can watch it from here. But again, I am making it complex. But if you easy, for this, you are going to use CID. For this, you are going to use TID. That's how we will have to do. So,
How can I do this? Again, there is no real shortcut of rather than making tables. Of course, I mean that is 100% true. You have to directly make a table. So if you do that, you will understand that for the first table, when you are using CID as an common attribute, then you are actually going to do this like CID, right, and like CNAME and blah 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 as such things, right. I will not going to write some unnecessary things when you are writing this, because CID is important, so we have to do that. We have to use this, and you can understand all the three attributes. I mean, sorry, all the three values in the attribute are common, so we understand that we will get three tuples. One is 101, right? Or for 101, you can understand what will be the TID, that is will be Ricky and 10, right, or not. I mean, you are trying to join this one with this one. So okay, TID will be 20 for 101, TID will be 20. And if you ask that why you are used TID, I mean writing TID now rather than others, because TID will be used for these cases. When you are joining this table, TID will be used. So we are just writing necessary information rather than the whole amount of information. TID will be 20. Again, that is okay. And then for 102, TID will be right. I mean, you can write in the comment section what will be the TID. It will be 10. And for 103, the TID will be 30. Right? TID will be 30. And once you completed the join between coach and team, आधा काम तुम्हारा यही हो गया. Now you don't have to worry about most things. You did this, right? You did that, and now you have to join this part for M and T. This will be again different with C and M. Sorry, M and T. That the way you do it with C and T, that the same way you have to do with M and T. So what will be the M and T? Again, the important part is TID. The important part is TID. So you have to use the TID, right? Now, are there any more important part rather than TID? Yes, we have a CID, right? And for TID, suppose it is 10, and if it is 10, you can clearly see that there are two 10s, right? So there will be two tuples. For 10, one will be 102, right? One will be 102. And for another 10, again it will be 100 and yes, again it will be 102 again. You can write that way. I mean, it will be the same CID, right? Correspond to the same CID correspond to the same TID. You will have same CID. Then we have 22. If you put 20, then it will be, I mean, what will be the CID? It will be 101, right? Correct. And
if it will have 30, what will be the CID? The CID will be 103, correct? So for one case, what we have done, just for one case, we have just did a natural join between C and T. And another case, we have did a natural join between T and C. Right? That way, we have done the things. And now, we have to understand that we did both the joins, but did it actually require? Actually not. Why? Because if you are joining 3 tables at once, you don't have to, again, just listen close, you don't have to use natural join 2 times. What? Yes. Because we did, 2 times with 2 different tables. You either use this one, then do with the coach table, either do with team and members and did with the coach table, or do with the coach and team and just use the member table, but not both. You don't require that. So we are going to choose this one, as just where we already created this, and other things you don't actually require. So you can use this table created by through natural join and the member table, and you can clearly see in the member table we have an attribute common. And when you have an attribute common, so you can use again as a natural join. That's how it clear. Now what you have to do? You can see it here in the coach table. They are using a condition. What? Yes, they are using a condition, guys. So as they are using a condition, so you have to put CNAME column 2 just to check the condition along with CID column here. Okay, that was a case. For 101, that is Ricky. For 102, that is Mark. For 103, that is Trevor. Right, for all of them, you have to write the column names. The values of the CNAME, the coach names. Okay, so write that. Completely understandable. And now you have to, because you have to understand, whenever these 3 tables are being joined, we have to check the condition, right? Whenever these 3 tables are being joined, it is a multi-condition. We are putting 2 conditions, right? So now we know there we have created this join and we have this member table. So once you apply here, the rows will increase. How? Just check here, guys. CID, CNAME, right? Another one, I don't care because I only
ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कर देना, बस आप लोगों को समझना है चीज़ें, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. And TID, that is important. I don't care about the other values. Who cares? Right? For TID, just check that it is 10. And if it is 10, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे था मार्क, यहाँ पे था कुछ 102. थोड़ा मेंबर टेबल पे चेक करो. सॉरी अगेन, मैं हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ करना, और ये आपको थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी. So again, you have to check again. Then we have another 10 in the member table. So I have to write it again. Yes, of course. And I have to write it here that C name is again Mark, and different with different pre-ID, and with again here it will be 102. Okay, so doesn't it is copied again? Do I have anything wrong? Because PID will be different. Okay, I completely understand. The PID will be different. It is where 1, it is 3, so it will not be similar. I'm just okay, that's why sometimes you have to calculate more, because you cannot put same things. Okay, completely fine. Then we have 30. For 30, you can understand that 30 is T. T means Trevor. So here you will put 30. I'm just putting this short because you don't have to calculate much in exam. Trevor. And here, I don't care about that PID value, because as you are working with TID, who cares about PID value? You should not. I mean, there's a burden. Okay, so then it is 30, and when it is 30, it is 103, right? Correct. So we have 3 rows now, and the last row, that is containing 20, right? With here, what will be here? It will be 101. And R, what is R? R is Ricky. R is Ricky, and it will be 101, right? तो आपने टेबल बना ही लिया, लेकिन you have to understand, they told that the C name should be Mark. So which rows will be considered? Are not these rows will be considered, right? Correct, guys. This row has the same C name, that is Mark. And we want you go to see these rows. They want PIDs of this. Okay, so they want PIDs, guys. Okay, so PIDs will be what? PIDs will be 1 and also 3. So they want those PIDs 1 and 3. I didn't mention that because that was not important that time. But whenever you are required something, you have to put in right? Otherwise you will miscalculate something. So now we require PID. That's why you are calculating. Otherwise we should not. So now we see that PIDs are 1 and 3. And once you understand, they want the members table PID, that is 1 and 3. You have to understand that they want the answer from the players table, right? They want the answer from the players table, that you have to get the minimum of the ages from the PIDs of 1 and 3. And what will be the minimum of the ages from the PIDs of 1 and 3? Can you answer this now? Can you answer it in the comment section, guys? The answer will be minimum of 26 and 31, right? Minimum of
PIDs of 1 and 3, so that will be 26, 31. The answer should be 26. That is the minimum, right? So answer should be 26. But always remember, whenever you are doing something, do any question, don't blindly think that every process is good, every process is thing, I am hero, I am going to get rank 1. No. There is the stop. You have to keep checking the master key. Always. No sir, I understand completely, I will get rank 1. That doesn't happen. You may think that, okay, I am going to do this, so I have to check the answer key. Always, always. Don't do this, that okay, I will be fine. This is wrong. So we are doing CS1, so you have to get the CS1 key and you have to check the question number, that is 55. The 55, go to 55 and check whether it is 26 or not. And yes guys, the answer is 26. So yes, we are correct. After so much of effort, so I am just cleaning it. You can, if you want to check, you can go before, I mean in the earlier in the video, and they can check. But whenever you are doing this, you have to calculate 2 tables, and once you calculate 2 tables, you have to calculate that joint table with another table. Okay, then नहीं सर टेबल बनाना नहीं चाहता वो नहीं, ऐसा नहीं होता. आप अगर कुछ भी यहाँ पे शॉर्टकट लगाने जाओ, आप कुछ कर सकते हो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वी कैन थिंक अबाउट सच प्रॉब्लम्स. ठीक है, मैंने भी ऐसा कुछ किया है. बट फॉर नाउ दिस इज नॉट an easy question. It will take time, at least 2.5 to 3 minutes, right? Otherwise the calculation mistake, you can understand. That's why we put some kind of questions later. So now, if you have any question, you can ask. Rather than it was just you have to create tables and checks and don't put unnecessary columns while solving. CT, no, I don't require CT. T name, no, I don't require T name. PID, not now. अभी ज़रूरत नहीं है. अभी मुझे PID का कोई ज़रूरत नहीं. PID बाद में लूँगा. PID आपको लास्ट में लगेगा. तो I don't need it now. Whatever you need it, write it first. The required things always should be put at first, and don't use anything other. PID बाद में लगेगा. You have to keep it now. Then the calculation will be much easier. So okay, go. We've done it, and again check for the next question. Easier. Let's go. यही होना चाहिए आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थे नॉर्मली, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऑफ कोर्स बहुत सारे इजी नहीं होंगे. ERP वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, ER मॉडल जो क्वेश्चन है ER मॉडल का, वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेगा. वहाँ आपको दिमाग लगाना है. आप बोलेंगे ना ईश्वर लगने वाला चाहता, तो वो जो क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन वैसे मैंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम सॉल्व होंगे. तो ऑलवेज द बेटर थिंग इज टू सिट डाउन एंड ट्राई. ऐसा नहीं कि चलो टॉपिक्स पढ़ लेते, ऐसा नहीं होता नॉर्मली, राइट? यू कैन थिंक दैट ओके जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. वैसा भी नहीं होता. अगर आप अटक गए तो आपको लगेगा नहीं कर लेते हैं क्वेश्चन. तो आपको बैलेंस करना है. Of course, I am not telling that you don't need knowledge, and also I am not telling that okay you don't you only need knowledge. No, actually that's not. हम गलती कहाँ करते हैं? गलती वहीं करोगे आप लोग जहाँ पे आप सोचना बंद कर दें. और ये होता है, हम लोग सभी के साथ होता है. That's why I have to try
ट्राई थिंकिंग थिंग्स। ओके, मुझे नहीं लगता यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आई थिंक मुझे हम लोगों को सेट 2 पे हम जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस है, दैट इज relation algebra, tubular relation calculus, not much tougher. Most of them are heavy quality. और अगर आप बोलेंगे कि ER मॉडल से वाला जो क्वेश्चन था इजी था, मैंने कल करा दिया था, तो I think we should go to the CS second part questions, right? Even if you have any problem, I can show you. Otherwise, आप कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं यहाँ से आपको थोड़ा बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। तो हम लोग CS2 पे चलते हैं, आई थिंक वो का 25 का, और यहाँ पे हम लोग ChatGPT एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, प्रोवाइड ऑल DBMS questions from this talk। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर डालना। अगेन थोड़ा बहुत मेहनत हमको भी लगता है भाई। अगर आपको थोड़ा कुछ भी समझ में आए चीज़ें, गिव अ थम्स अप एंड यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वांट टू कीप watching such content, and you can criticize if you think that okay, this is not the right approach, whatever I'm trying to say, because I'm also learning, of course. I'm also helping other people to learn. I teach somewhere in a college, so let's go, guys. I mean, I don't know, some people are telling me that why should you use ChatGPT? You can use Claude, you can use you blah blah blah. I mean, तुम्हारा है भाई, पैसा ले लो, घर वाले का पैसा है तुम्हारा, यूज कर लो। तो इतना क्लाउड यूज करना है प्रीमियम लगा के, कि किसको जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, ठीक है मैम। अदरवाइज आई मीन इट्स ओके, यू कैन यूज ChatGPT और एनी काइंड ऑफ AI फॉर पर्पस। ओके, हमारा प्रॉम्प्ट आ भी गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 इज द ट्रांजैक्शन एसेट प्रॉपर्टी। सही है, अगर ये हम लोगों को सही रास्ते पे भेजा तो सही है, नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि नहीं, मतलब क्वेश्चंस सही तरीके से नहीं आ रहे, ठीक है। सेट जितने भी सेट हमने देखे, क्वेश्चन इज नॉट, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, राइट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग राइट क्वेश्चंस। आई मीन वो कहीं भी डालो आप, कहीं भी कितना भी अच्छा, ठीक है, क्लाउड हो ये हो, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ ढूंढने की। एंड फर्स्ट क्वेश्चन 27, let's try to go there. I think it will be 20 if we, okay, 27. Okay, I think we crossed the question. Okay, no, okay, correct. हाँ, बहुत देर के बाद गाइस हम लोगों को एक अच्छा चीज़ हाथ लगा है। अब आप लोग अगर कर पाओ मेरे पहले तो सही है, कर लो, और नहीं कर पाओ थोड़ा रुक जाओ, एक बार पानी पी लेते हैं। ऐसे आसान सा क्वेश्चन है, एन ऑडिट ऑफ बैंकिंग। ओके, यहीं पे आपने खत्म कर दी क्वेश्चन सॉल्व करने का जो भी अंदाज है। इतना कोई पढ़ना नहीं चाहता। Again, I mean, just think about this, that you are sitting in an exam, you are trying to get audit of banking. No, this is destroying the brain. Who don't know, no one try to read the question like this. This is completely, if you are trying to read, this is not the way actually. ठीक है, आप जब भी इस क्वेश्चन की तरह एक कुछ भी, मतलब एक बार, ठीक है, एक बार नज़र डालते हो, थोड़ा बहुत, झूठ मत बोलना भाई, थोड़ा बहुत आपको मतलब पता चल जाता है, हाँ भाई क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है,
मतलब आपने देखा 10,000, ठीक है, उसके बाद हाँ देखा कि 10,000 ट्रांसफर कुछ कर रहा है, उसके बाद देखा कि 11,000 हुआ। देखिए बोथ मतलब दोनों ने कुछ ट्रांजेक्शन किए, तो एक ने क्या किया 11,000 रीड किया एज द इनिशियल बैलेंस इन ए एंड वी आर अलाउड टू गो। ओके ओके ओके, इस वक्त में ही आपके दिमाग में कुछ हरकत हो गई, सही है। Some people say, okay, whole read the whole question, guys, and get rank 1. No. So let's do whatever we are trying to, we can do. Right? Never ever put effortless. That does not mean you have to exhaust, keep putting effort. No, that's not. You cannot do them. We cannot do them. So give less effort. क्या बोला जा रहा है? जॉइंट होल्डर है और ए ने अटेम्प्ट किया था साइमल्टेनियस ट्रांसफर्स ऑफ 10,000 ए से बी में, राइट? ए ने किया था। इफ यू रीडिंग द क्वेश्चन, ए वाज ट्रांसफरिंग, राइट? ए ट्रांसफर्स टू बी, ऐसा कुछ अब दिमाग में चल रहा है आपका, हाँ ए से बी के हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, completely fine. Now see that okay, completely fine. अब बोला जा रहा है क्या कि आप एक वैल्यू रीड कर रहे हो 11,000 एज द इनिशियल बैलेंस इन ए। अच्छा, पहले 11,000 था। अच्छा भैया, ऐसी बात है क्या? सही है। उसके बाद अब आपका दिमाग मतलब ठीक है, लाइन पढ़ते पढ़ते दिमाग गया एंड अलाउड, इजाजत दे रही है बी के अकाउंट में जाने के लिए, और उसको बी को जो क्रेडिट हुआ वो 10,000 2 बार हुआ, ऐसा कुछ आपने पढ़ा। उसके बाद बोला जा रहा है ए को कुछ डेबिट हुआ और उसके बाद उनको 1,000 रुपए वहां पे रह गए। इतना तक पढ़ते पढ़ते आप कैलकुलेशन कर ले रहे थे, जो कि गलत है। कैलकुलेशन is not required because you can clearly see whatever trying to say. Are they asking for calculations? No, actually not. That's why you don't need to read, they don't need to necessarily put effort. All the things they're asking for, which thing is violated by the system, that's what they're asking. A चाहता था B को कुछ भेजना 10,000, ये आपने समझ लिया, हाँ भाई सही है, ए बी को भी कुछ पैसे भेज रहा है, मतलब मेरे अकाउंट में ना जाए, बी के अकाउंट में ही जाए, ठीक है, आप पढ़ के इतना समझे। उसके बाद आपने देखा कि दोनों जो ट्रांजैक्शंस हैं ये सेम वैल्यू 11,000 रीड करता है एज द इनिशियल बैलेंस इन ए एंड वी आर अलाउड टू गो थ्रू बी was credited 10,000 2 बार आया। यहाँ तक आते आते आपको मैं 1000 टाइम्स बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा और आप कैलकुलेशन करने लगोगे जो कि जरूरत नहीं है। हमें एथिक्स समझना है, क्योंकि वायलेशन की बात की गई है यहाँ पे। आपको एसिड प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, आपको अगेन when you start up to read acid properties, no, this is wrong. Even though you are starting to get knowledge about something that is not required, is exhaustion. So just read and think differently. जब आपने पहली बार पढ़ा तब आप थोड़ा समझे, हाँ कुछ, उसके बाद समझे हाँ भाई थोड़ा इंग्लिश वर्ड का जम्बल अप है, चीज़ें उतना होशियारी से समझ में नहीं आ रही, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है मुझे भी, लेकिन एग्जैक्ट जो ये कहना क्या चाहते हैं ये आपको समझ में नहीं आया। फिर मैंने भी पढ़ा, अगर इतना आसान होता
तो आपको पहली बार में समझना आता, लेकिन नहीं, ये कुछ ना कुछ ये चीज़ छिपा रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप मतलब यहाँ पे कुछ एटोमिसिटी का कुछ ठीक है, कुछ एटोमिसिटी या फिर कंसिस्टेंसी कुछ भी आप यहाँ पे कुछ लगा दें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आप टिक मार्क कर दें, जो कि गलत है। Of course, this actually shouldn't be. You have to read it clearly. So now you can see that we have, I mean, both the accounts, both the transactions, sorry, read the same value, 11,000 as the initial balance in A. And whatever you're trying to say about the both the transactions, right? I mean, what does that mean? Both transaction का क्या मतलब है? दोनों ही transactions? मतलब दोनों transactions जो है उनका मतलब A से निकला और B में गया। Two transactions. If you can understand the things, whatever they are trying to say, two transactions mean they are checking A and the B. Before the transactions, I think this they are trying to say, and also they are trying to say that कि I mean आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए इस चीज़ का कि जो पहले जो बैलेंस था वो 11,000 था, राइट? पहला जो बैलेंस उनका था वो 11,000 था। अब राइट, अब उन्हें ट्रांजैक्शन की आई थिंक ऐसा कुछ अनुमति दी गई, इजाज़त दी गई, और बी का क्रेडिट हुआ 10,000 दो बार, 10,000 दो बार क्रेडिट हुआ बी का। देन क्या आया बी में, ऐसा कुछ है, राइट? करेक्ट। अब बोला जा रहा है एक ए में से एक बार ही पैसा कटा है, और ठीक है, मतलब क्या 10,000 कटा है, और बाद में जाकर कितना बना है, 1,000 बना है। राइट, और यहाँ पे कितना है, 10,000 है, राइट? यहाँ पे ए में कितना कटा, 10,000 कटा, बी में कितना क्रेडिट हुआ, बी में जितना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बी में कितना था, बी में 10,000 क्रेडिट होगा। ये बोला कि 10,000 दो बार क्रेडिट हुआ, ऐसा क्या हो सकता है क्या? तो गलती हुई, एक कॉन्सिस्टेंट की गलती थी क्या, ऐसा कुछ है क्या? 10,000 दो बार हुआ है, मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है? He was credited 10,000, क्या ये कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है? अगर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता तो लेट्स सी बिकॉज आपको पता ही है कि दोनों का जो रिजल्ट, दोनों का जो एग्जिस्टिंग मनी लास्ट में उसका जो समेशन है, दोनों को अगर ऐड करते हो वो सिमिलर होना चाहिए, लेकिन इधर नहीं हो रहा, राइट? इधर दो बार 10,000 चला गया, तो मतलब एटॉमिक होना चाहिए, राइट? जो कि एक्चुअली में वायलेट हुआ है,
एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे वायलेट हो रही है, दिख रहा है मुझे, मतलब again their total amount should be same, but here not the case. जब consistency का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या इसमें, ये consistent नहीं है, I don't think. Isolation, क्या आइसोलेशन की कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, और नॉट? आइसोलेशन का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रहा, या हो रहा है? ड्यूरेबिलिटी कि एक टाइम पे बैलेंस पूरा हवा हो जा रहा है, एक टाइम कुछ दिखा रहा है और थोड़े बाद ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे ड्यूरेबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लग रहा, ऐसा नहीं कि पहले कुछ आपका आउटपुट था उसके बाद में कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ है अभी के लिए ये चीज़ नहीं लग रहा। कंसिस्टेंसी का कुछ प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट नहीं हुआ हो पाया रिजल्ट, आपको लगता है? मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंट वाला प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे 2 बार बी के पास पैसा आया है, ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक बार स्टार्टिंग में ए के पास कितना था, 11,000 था, सही है। अब बोला जा रहा है कि बी के पास 2 बार 10,000 आया है, और ये भी बोला जा रहा है कि बेटा ए के पास, बेटा गरीब है, ठीक है, इतना गरीब बेचारा इंसान है कि उसके बाद 10,000 बच गया। 10,000 बच गया मतलब क्या, एक बार उससे 10,000 कटा है, 11,000 10,000 एक बार कटेगा तभी तो 1,000 आएगा ना। ये बी बोला जा रहा है कि 2 बार 10,000 लेके बैठा है, और ऐसा है क्या कि कुछ सी इसको अलग से इसको 10,000 दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखो बोला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम एटॉमिसिटी में आ रही है। कैसे? एटॉमिसिटी मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होने के पहले ए और बी का अमाउंट था, इसका जो सम था, सपोज यहाँ पे जो भी ए का सम था, सोचो ए का सम 11,000, बी का सम 2,000, ऐसा कुछ अगर था, तो एटॉमिसिटी के मतलब सॉरी ट्रांजैक्शन के बाद भी वही चीज़ रहेगा, 11,000 और 2,000। सोचो यहाँ पे 4,000 कम कर दिए, ए के पास ट्रांजैक्शन में 4,000 ए ने बी को दे दिया, तो बी के पास 4,000 और आ गया, तो बी के पास 4,000 और आ गया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अरे बाबा पैसा तो उतना ही रहा ना, पैसा ऐसे कम तो नहीं हो गया, बढ़ भी नहीं गया। तो एटॉमिसिटी यहाँ पे बोला जा रहा है बी को 10,000 और मिल गया, कहाँ से मिलेगा भाई, कहाँ से मिलेगा? यही तो प्रॉब्लम है। तो आपके पास पैसा बढ़ रहा है, तो ये एटॉमिसिटी का ही प्रॉब्लम, बाकी चीज़ कोई वायलेट होते दिख ही नहीं रहा। तो अगेन आई थिंक इट्स ऑप्शन ए इज राइट, बट अगेन चांस में मत फंसना भाई, आपका काम गलती करना है, उसके बाद सीखना है। डोंट थिंक ओके आई टोल्ड द राइट थिंग, नो, सो हैव टू चेक अगेन द आंसर की में क्या दे रहा है, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में अगर थोड़ा देखो तो यहाँ पे बी और सी दिखा रहा है, ये क्या CS2 में है, ये CS2 में है, तो ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, एटॉमिसिटी आंसर है ही नहीं। व्हाट, बट व्हाई? फंस गए भाई, आपको बोला था मैं एटॉमिसिटी, लेकिन एटॉमिसिटी आंसर नहीं बता रहा। लेकिन अगर यही होता जो मैंने आपको समझाया, दैट्स द रीजन ऑफ एटॉमिसिटी। लेट्स चेक ChatGPT, आई मीन ओके, लेट्स ask AI why in question number 27 A is not the answer, because we can clearly see that
The logic we are using is not that is not false. So let's see whatever they are telling us. You have to do it too. It doesn't mean you have to check the solution and answer, then okay, so then start preparing. You have to have some knowledge, put it in the question, ask. You can help AI. You can take help of AI to filter your knowledge, whatever your knowledge have. तो अगेन तो ये बोला जा रहा है कि नॉट एटोमिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, और आंसर में ये बोला जा रहा है द क्वेश्चन सेज बोथ ट्रांजैक्शंस रीड दिस वैल्यू, ओके, both proceed with their transfers, okay, thus are credited to B twice, okay, A is debited only once. Why C isolation? Okay, completely fine. Okay. तो ये बोल रहे हैं कि दो ट्रांजैक्शन अलाउड है टू इंटरफेयर ईच अदर. They both read the same old value. They both made the decision on same value. Okay, लेकिन आप अपडेट करना भूल गए. Okay, completely fine. I don't know whether you read lost update anomaly or not. यहीं भी फंस गए हम लोग उसके लिए. तो लॉस्ट अपडेट एनोमली जो होता है वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है दो ट्रांजैक्शन, जो अलग अलग ट्रांजैक्शन, ठीक है, जैसे आप समझो कि दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस, ठीक है. यहाँ पे ये कुछ ने राइट किया, यहाँ पे इसने रीड किया, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन. आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट मोर इम्पोर्टेंट यूज टू अंडरस्टैंड टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, इसने राइट किया, इसने रीड किया. अगेन lost update problem comes from a very certain criteria. Means there is some certain things that lost update problem comes. Whenever, suppose you read that and again you write it here and someone again write it, तो आपने जो write किया था वो गया, that gone, right. आपने चेंज किया ए का वैल्यू, थोड़ा अगर समझने की कोशिश करो, आपने ए का वैल्यू अपडेट किया, लेकिन फिर किसी ने क्या किया, बीच में आके एक ट्रांजैक्शन चुपके से ए का वैल्यू फिर मैंने, ठीक है, बी का वैल्यू कुछ अपडेट किया, बीच में फिर और एक ट्रांजैक्शन बी का वैल्यू फिर से अपडेट करके चला गया. तो आइसोलेशन मतलब सब अलग अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग, कोई किसी के बीच में टांग अड़ाना नहीं आ रहा. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया कि आपका जो भी आप काम कर रहे थे वहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या आ गया आपका, आप क्या कर रहे हो, वैसे गलती कर बैठे हैं यहाँ पे, राइट. यू डिड रॉन्ग थिंग. व्हाट रॉन्ग थिंग? यू डिड इंटरफियर बिटवीन ट्रांजैक्शन. लेकिन मुझे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, लेट्स सी दैट one thing, why it is not atomicity problem, because if you see that I have to write the ChatGPT that we can see the sum of transactions
before and after would differ, then why not atomicity problem? That's the question. Why not atomicity problem? If this happens, I have to think about it. Okay, again, it is reasonable that a final database state does not automatically mean, okay, our concern is reasonable that yes कि आपका डिफर तो हो रहा है, लेकिन ये एटॉमिसिटी प्रॉब्लम नहीं होगा. उसके पीछे एआई का डिस्टिंक्शन है कि a wrong final database state does not automatically mean atomicity. मतलब look at what happened in this question. ट्रांजैक्शन T1, इसने क्या किया? ट्रांसफर किया. किसको? ए से बी को, राइट? यस. ट्रांजैक्शन T2, ओके, इसने क्या किया? ट्रांसफर किया. तो सर किसे? ए से अगेन बी को, राइट? बोथ read A 11,000, B gets 10,000 twice. This is exactly what happened. This is exactly what happened. A get debited only once. Both transactions read 11,000 and then क्या किया? इसको डेबिट किया, ट्रांसफर 10,000, right? Again another transaction, transfer 10,000, correct? Again read that 10,000, correct? And then A get debited twice. The final state is inconsistent. Inconsistent, so it's a consistency problem, not an atomicity problem. Okay, आपको थोड़ा अगर इजी वे से समझना है तो इसका मतलब ये है नॉर्मली कि आपके पास कुछ बोला जा रहा है कि 10,000 है, ईच फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी आपको ट्रांसफर करवाने थे, और बोथ द ट्रांजैक्शन आपको क्या कर रहा था? यहाँ पे 11,000, they are reading this, it is 11,000, right? They read A, and that is 11,000. Both of them, right? Both of them read it is 11,000, and the initial values was 11,000, and then B was created 10,000. मतलब आपने यहाँ पर भी क्या किया? राइट किया. आपने 10,000 की कि भाई ले लो बी, गरीब हो, ठीक है, 10,000 आप ले लो, और यहाँ पर भी आपने किया, ठीक है. अब जब क्रेडिट की बारी आई, यहाँ पर आपने क्या किया? बी को रीड किया, सॉरी,
कि यहाँ पर आपने 10,000 निकाला, यहाँ पर 10,000 निकाला, और ओके यहाँ से आपने 10,000 निकाले, यहाँ से भी आपने 10,000 निकाले, नहीं ऐसा नहीं हुआ। बी में 10,000 गया है 2 बार, लेकिन आपने निकाला एक बार ही है। दैट इज एक्चुअली नॉट अ कंसिस्टेंट, बिकॉज अगर आपने 2 बार निकाले हैं तो यहाँ पे दिस शुड contain exactly 2 times. That was it actually written here. This is the problem. And again, another problem with the transaction, because this transaction if comes, अगर ये right के पहले आ जाता है, सही है, but they are just doing what? They are just doing again. They are just another transaction interfering, so that it is delaying the exact result. It is just manipulating the result. This is absolutely valid. Even the isolation is validated, right? We can check it later, but I think it is very important to understand this question, because मेरा दिमाग तो घूम गया भाई. I mean, how can I do this? If you really want to solve this question, you can directly type it here, that I mean it is actually making a problem. I am feeling very whatever, I don't know. So you can directly write it, that the minimum knowledge required to solve the problem. And this is an easy question. You should try this. It's not such very tough. चलो भूख भी लग गई है, थोड़ा खा भी लेते हैं और क्वेश्चन को भी देखते हैं. Okay, so they are giving us some gyan. Oh sorry, I think I just, it's completely fine. Okay, so let's just पानी पी लेते हैं. चलो भूख नहीं, खाएंगे अभी कुछ. Okay. They are telling, okay, you have to understand it through that what is actually required here. So you have to understand the atomicity. या तो पूरा हो गया या फिर कुछ नहीं हुआ है. Other operation happen or not happen. Constancy, you know, and मुझे थोड़ा बहुत मतलब तो पता ही है, ठीक है. Database rule must satisfied. Isolation मतलब concurrent transaction should not interfere incorrectly.
विद ईच अदर, सब अपने अपने कॉन्करेंट में चलने चाहिए, सॉरी अपने अपने सीरियली चलने चाहिए। अब आप थोड़ा बहुत सीरियली अगर पढ़े होंगे तो सीरियल ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, that's another, that's the way. And again the durability, once the transaction is committed its change should not be lost, right? That's what is the durability. It's okay. This is the minimum thing. For question number 27, two transactions read the same old value interfere with each other. अब मैंने पढ़ा हुआ था, कुछ याद हो रहा है थोड़ा बहुत, कि अगर आप जस्ट ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो तो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है ना, इज मोर इम्पोर्टेंट. I can understand that what is the transaction is, right? अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो आप एक जगह से पैसा निकाल रहे हो, दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, राइट? इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन. लेकिन जब आप पैसा निकाल रहे थे, देन B was created 10,000 twice, और आपको A को रीड किया आपने, A को आपने रीड किया, सही है, A को आपने रीड किया, उसके बाद आपने A को राइट किया, कि पैसा निकाला यहाँ से. अब थोड़ा समझने की कोशिश करो आप. उसके बाद क्या किया आपने, B को राइट करते कि हाँ भाई लो पैसे ले लो, उसके पहले तो B को राइट आपने किया, और जितने होते उतने पैसे वहाँ चले गए, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाए, इट्स ओके. नाउ टू अंडरस्टैंड दैट A को फिर से पैसा गया, नहीं A को फिर से पैसा नहीं, A से पैसा एक बार ही निकला, लेकिन B को कोई और ट्रांजैक्शन आया, क्या किया उसने, उसमें B को क्रेडिट किया, तो ये एक्चुअली कॉन्करेंट नहीं हुआ, सीरियल नहीं हुआ ना, ये प्रॉपर चल नहीं पाया, कोई और एक ट्रांजैक्शन आया और आपका जो ट्रांजैक्शन है इसको क्या कर दिया, इसको बीच में इसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो कॉन्करेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए आइसोलेशन का प्रॉब्लम आया, राइट? और कंसिस्टेंसी का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाई इट इज नॉट कंसिस्टेंट? बिकॉज कंसिस्टेंसी में अगर आप देखें, कंसिस्टेंसी का जो प्रॉपर्टी है, डेटाबेस रूल और कांस्टेंट शुड रिमेन सेटिस्फाइड, और यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी. तो ये इसलिए एटॉमिसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि
Okay, I think I should take time. We just stuck here. I don't want to waste your time, so I will again check this question. Thank you for the live. Okay, we will get back to you. We will get back to the live again after some time.